Assalamualaikum students, this is Rehan sir. Hope you all are doing great and doing your homework regularly. So today we are going to discuss how to find the sum of an nth term of an AP. अगर हमारे पास कोई भी AP गिवन है और उसका हमें सम फाइंड करना है तो हम वो कैसे करेंगे, आज वो हम डिस्कस करेंगे. तो सपोज आपकी कोई भी AP अगर गिवन है A1, A2, A3 and up to N. Here we are representing last term by the letter L. हम L से last term denote यहाँ पर कर रहे हैं. So what is the formula to find the sum of this AP? So the formula is the sum of nth term is n by 2 2a plus n minus 1 d. This is the formula to find the sum of the whole AP. इस फॉर्मूले से हम पूरी AP का सम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जो आपका फॉर्मूला है सम निकालने का, ये हमारे कंपटीशन लेवल पर भी पूछा जाता है. हमारे पास सीरीज दी होती है और उसका सम पूछा जाता है, तो कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. सो अगर आपके पास कोई भी सीरीज है उसका हम सब टर्म्स का प्लस बार बार नहीं करने के बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड वी गेट द सोल्यूशन. सम फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं. फर्स्ट फॉर्मूला ये रहा, सेकंड फॉर्मूला है Sn is equal to n upon 2 a plus n. Sn is equal to n upon 2 a plus n. ये दो फॉर्मूले, इन दोनों की फॉर्मूलों की हेल्प से हम किसी भी पूरी फुल AP का सम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है. n रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP. एक पर्टिकुलर AP में कितनी टर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है n, एंड a इज फर्स्ट नंबर, d इज द कॉमन डिफरेंस. हियर l मीन्स द लास्ट टर्म ऑफ द AP. So by using this any one of these formula, you can find out the sum of the given AP. So let's try and solving the question on each formula. हम एक दोनों क्वेश्चंस करेंगे. जो एक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट फॉर्मूले बेस्ड होगा, सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड फॉर्मूले पे बेस्ड होगा. सेकंड फॉर्मूले में जैसे आपको पता चल रहा है कि हम ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे. ये फॉर्मूला इजी कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि हमें लास्ट टर्म पता होनी चाहिए. लास्ट टर्म पता होनी चाहिए. इस फर्स्ट फॉर्मूले कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि वी हैव टू नो द लास्ट टर्म. अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी तब भी हम इसकी हेल्प से फॉर्मूले सम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से. सो यही बेसिक डिफरेंस है कि सेकंड वाला फॉर्मूला इजी है, बट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ L, दैट इज लास्ट टर्म. Or if we don't know the value of L, we can simply apply the first formula. Let's find out. So here is our first question. In this question we have to find the sum of first 80 terms. So we are solving this question by the first formula. So what is the first formula? Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d. This is our first formula. So for applying this formula we must know what is n, a and d. So I am writing over here what is the value of n. N means I already told you wherever it is written nth term it is denoted the n. जहाँ पे भी कहीं पे भी nth term लिखा होता है वो क्या होता है, हमारा n होता है. यहाँ पे क्या लिखा है 18 terms, यानी क्या है ये n है. So we have having the value of n is 18 and the value of a is first term of the AP, that is 9. This is the first term, so the value of a is 9. Value of d की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, a2 minus a1, and the value of d is
7 minus 9. That is D is equal to minus 2. Now simply apply the formula and put these values. So I am putting all three values in the formula. Sn is equal to n 18 upon 2. 2 multiply the value of a is 9 plus n, again n, 18 minus 1 multiply minus 2. Clear? So now solve this and find the value. Here it is cancelling. 9 18 plus 17 multiply minus 2. 9 18 minus 34. Sn is equal to 9 multiply 6. 16, 9 6 are 54, 9 1 is 9, 5, that is 44. So this is the value of Sn. This is the value of Sn. Now here we are getting the sum in minus sign. So why we are getting this minus sign? Because our AP is in decreasing order. हमारी AP जो है वो decreasing order में आ रही है और 3 देन हमारे पास क्या टर्म आएगी 1, देन उसके बाद हमारे पास नेगेटिव टर्म्स स्टार्ट हो जाएंगी. जब नेगेटिव टर्म्स स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो ज्यादा होंगी. तो जब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होंगी इनका सम हमारे पास ज्यादा होगा बेसिकली. तो आंसर हमारे किस में आएगा? नेगेटिव में. बिकॉज इन एडिशन वी हैव टू पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हमारा आया है. सो आप एक बार देख लीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस मेथड काइंडली आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन विद डिफरेंट फॉर्मूला. हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम 5, 13, 21 अप टू 181. इस क्वेश्चन में हमें इस सीरीज का सम निकालना है. सो एज यू कैन सी दिस एपी इज इन असेंडिंग ऑर्डर. ये हमारी एपी जो है किस ऑर्डर में है? एक असेंडिंग ऑर्डर में है. सो हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर. सो व्हाट इज आवर सेकंड फॉर्मूला? Sn is equal to n by 2 a plus l. We are applying this formula because we are having the last term. L stand for last term. Now in this question we don't have the value of n. हमारे पास इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ n नहीं है, यानी हमें ये नहीं पता है ये 181 कौन से नंबर की टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन 181 कौन से नंबर की है वी डोंट नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. To find the value of n, we are using our usual formula, that is the formula for an. So I am using here the formula, that is an is equal to a plus n minus 1 d. an means an का मतलब हमारे पास होता क्या है कि हमें जिस टर्म का नंबर निकालना है उसे हम an मान लेते हैं. इसमें हमें किस टर्म का नंबर निकालना है? 181. So here the value of an is 181. The value of a is 5 and we have to find it, and the d is 30 minus 5, that is 8. Now just do the calculation and find the value of n. 181 minus 5 is equal to n minus 1 multiply 8. 181 minus 5, that is 176.
divided by 8 is equal to n minus 1. 8. The value of n is 23. So here we get the value of n, and in this formula we are only required the value of n, a and l. The value of a and l we already know. What is the value of a? 5, and the value of l is 181. I am writing over here again. The value of a is 5 and the value of l is 181. We can represent this l with an also. In some of our books it is representing with l, while others in as an. So we can write in both ways. So now just apply this formula. That is the formula of Sn. Sn means the sum of n terms. Sn means sum of n terms. N by 2, that is 23 by 2 a plus l. The value of a is 2 and the value of l is, the value of a is 5 and the value of l is 181. 23 by 2 and 186. Solve this. Multiply these two terms and you will get the answer. So here are the two ways why we are using any of the formula in any question. हमारे पास जरूरी नहीं है अगर ये हमारे पास रिप्रेजेंट है तो इसमें हम यही फॉर्मूला यूज करें. We can use the first one formula also, and in the first one we can use this formula also. For using this formula in that question we have to find the an or l first. So उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें an और l निकालना पड़ेगा, then we can able to use this formula. So जैसा convenient लगे, convenient के हिसाब से हम अपना formula देखेंगे कि कौन सा convenient हमारा formula लग रहा है, whether it is convenient for this formula or that formula. So I hope the concept of the sum of n term is clear now. If you still have any doubt, you are welcome to ask and solve the NCERT questions and send me the solution. So आज के लिए बस इतना ही. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.